Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and let us discuss Dirichlet test for uniform convergence of series. जैसे अबेल टेस्ट था वैसे ये है, आसान है। बेसिकली पहले जो सीरीज के लिए हमने डिस्कस किया था इसी टाइप से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए भी है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, स्टेटमेंट क्या है इसका। ठीक है, सीरीज summation n x b n x where n belongs to a natural number and x मान लो कोई क्लोज इंटरवल a comma b है। सीरीज n x b n x is uniformly convergent if summation n x का मॉडुलस is less than equals to k for each x belongs to a comma b। ठीक है, and n belongs to natural number, okay, where n varies from 1 से n, and bnx is monotonically decreasing function of n and uniformly converges to 0। ठीक है, अच्छा डिरिचलेट अबेल टेस्ट, ये जितने भी टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली इफ कंडीशन, नॉट इफ। बेसिकली वन वे ट्रैफिक है ये भी। ठीक है, बोथ वे सही नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें बेसिकली अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब तो क्या हो गया कि पार्शियल सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, ठीक है, उस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो बाउंडेड है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। मींस ये जो के है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड एन बोथ। ठीक है, so for every x and natural number n, this is bounded, this sequence of partial sums is bounded, and the bn x term is monotonically decreasing and uniformly converges to 0। so this is what Dirichlet test says। okay, ओके, इसको अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। इसका अल्टरनेट स्टेटमेंट ये भी है कि जैसे इसमें समेशन ए एन एक्स इज यूनिफॉर्मली convergent or oscillates finitely, and bnx is monotonically decreasing function of n and uniformly converges to 0 for each x belongs to a comma b and natural number n। ठीक है, then series summation a n x b n x where n is natural number is uniformly convergent on a comma b। ठीक है, आई होप क्लियर है। हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सब जो स्टेटमेंट वन है ये यूज करेंगे हम। ठीक है, इससे सोल्व होंगे। सो लेट अस ट्राई सम क्वेश्चंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। Summation cos n x divided by n power p where p is greater than 0 and x belongs to alpha comma 2 pi minus alpha and alpha is less than pi and greater than 0। ठीक है, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ डिरिचलेट है। देखो इसमें अगर एन एक्स अगर cos n x लिया जाए, ठीक है, अब समेशन एन एक्स किया जाए पार्शियल सम ऑफ एन टर्म्स, तो क्या आएगा cos x प्लस cos 2x प्लस cos n x, ये हो गया। ठीक है, इसका सम तो वी हैव डिस्कस प्लेंटी ऑफ टाइम्स, सो आई एम यूजिंग दैट रिजल्ट डायरेक्टली। cos x प्लस n माइनस 1 x by 2 इंटू साइन एन एक्स
बाई 2 डिवाइड बाई साइन x बाई 2। ठीक है, ये सब मैंने डिस्कस किया है बेसिकली प्रीवियस लेक्चर्स में, और जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करके वी कैन गेट दिस सम, तो ये आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अभी हमें देखना है कि ये बाउंडेड होना चाहिए। सो इसका अगर मॉडुलस देखा जाए, इसका जो मॉडुलस होगा दैट विल बी लेस देन, ये सब तो लेस देन 1 हो जाएंगे। ठीक है, और डिवाइड बाई साइन x बाई 2, और x जो है दैट इज फ्रॉम एल्फा टू 2 पाई माइनस एल्फा, बेसिकली एक बाउंडेड इंटरवल है हमारे पास, एंड एल्फा लाइज इन 0 एंड पाई। ठीक है, तो यहाँ अगर x बाई 2 की बात करें तो दिस विल बी बिटवीन एल्फा बाई 2 टू पाई माइनस एल्फा बाई 2। ठीक है, और एल्फा बाई, अच्छा एल्फा बाई 2 भी देखा जाए तो दैट इज फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ये क्या है, ये 0 से पाई बाई 2, और ये भी, हाँ, तो बेसिकली ये लेस दे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, बेसिकली मान लो ये एल्फा बाई 2 है यहाँ से। ठीक है, एक्स बाई 2, तो एल्फा बाई 2 और पाई माइनस एल्फा बाई 2 तक जाएंगे। ठीक, तो जैसे एल्फा को अगर फॉर टाइम बीइंग इफ वी टेक एल्फा बाई 2 पाई बाई 4 ले लिया गया, तो ये पाई बाई 8 से लेके पाई बाई 4 लिया, पाई बाई 8, पाई माइनस पाई बाई 8 दैट इज 7 पाई बाई 8, राइट, पाई माइनस पाई बाई 8। ठीक है, ये होगा, तो यहाँ कहीं रहेगा ये इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ तक इंक्रीज करेगा भाई साइन, हमें साइन की यहाँ पे क्या चाहिए, ये मैक्स कब होगा, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। तो बेसिकली साइन की मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, यहीं पे होगी। इधर तो इंक्रीज करेगा, फिर इधर से ऐसे भी इंक्रीज करेगा, तो देखा जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू अल्फा बाई 2 पे होगी। सो इसका मोड विल बी लेस देन साइन 1 डिवाइड बाई साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, सो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि जो ये है दिस पार्शियल सम ऑफ n टर्म्स इज बाउंडेड। ठीक है, सो so summation a n x n varies from 1 से n is bounded, uniformly bounded in fact, यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मतलब है कि x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ना ही n पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या चाहिए, पहली कंडीशन डिरिचलेट में यही होती है कि जो एन एक्स सीरीज है दैट शुड बी द पार्शियल सम ऑफ n टर्म शुड बी बाउंडेड इन दैट, एंड the second part जो bnx होता है that should be monotonically decreasing and should uniformly converge to 0। so वो तो है, यहाँ पे देखो bnx क्या हो रहा है, bnx is 1 divided by n की पावर p, this is monotonically decreasing, ठीक है, to 0। ओके, बिकॉज p जो है ये ग्रेटर देन 0 है, so that's why it will be monotonically decreasing। so by Dirichlet test series is यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। आई होप समझ में आता है। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पावर सीरीज डिस्कस की है, वहाँ पे देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। उसमें एक वन क्वेश्चन आई हैव टेकन वेयर बेसिकली द सीरीज is convergent everywhere except modulus z equals to 1। so modulus z equals to 1 can be anywhere 1 into e raised to iota theta, ये कहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। so in that case that series is convergent everywhere except z equals to basically plus minus 1 and plus minus iota even at these points। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है ड्यू टू डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है, someone asked in that comment section, so the explanation for that is this। ठीक है, उसमें जो अदर पॉइंट्स है उस पर वाइट डिरिचलेट टेस्ट दैट विल कन्वर्ज। सो ठीक है, इसमें अपने सिलेबस में ये भी मेंशन है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस फॉर कॉम्प्लेक्स टर्म एज वेल। तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, nothing more but just what we have to see is that complex number is nothing but x plus iota y form। so if we could show that sequence of complex term
अगर उसका जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है, इफ दे कन्वर्स देन विल से कि द सीक्वेंस और सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म विल आल्सो कन्वर्स। तो ये सब यूज करेंगे हम, जो रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट जितने भी हमने सीखे ना, उन सबसे वी कैन बेसिकली कमेंट ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म एज वेल। ठीक है, इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, we have to just prove that real and imaginary part of that complex sequence of series is convergent, and from that we'll say कि yes, because real and imaginary part of complex terms is convergent, so the resultant sequence or series made by the complex term will also converge। ठीक है, तो उसमें explanation ये है डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब देखो अगर इसमें है ना, इसमें हाँ जैसे p है, इसको p को अगर 2 कर दें यहाँ तो p ग्रेटर देन 0 है, तब भी कन्वर्स कर ही रहा है। अगर p को 2 कर दिया जाए n स्क्वायर, तो डायरेक्ट एम एन टेस्ट से बोल सकते हैं, क्योंकि दिस विल बी लेस देन समेशन 1 बाय n स्क्वायर, सो ये कन्वर्स हो जाएगा। बट व्हेन मान लो n 1 ही कर दिया, देन वी हैव टू रिसोर्ट टू डिरिचलेट टेस्ट, इवन इन दैट केस इट विल कन्वर्स, राइट। सो इट्स सिंपल येट गुड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही साइन वाला होमवर्क, चलो ये होमवर्क कर लो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेसिकली। ठीक है, ये क्या है, समेशन साइन एन एक्स n power p where n is natural number and p is greater than 0 and x is alpha comma 2 pi minus alpha। तो ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगी, सिमिलर प्रोसेस। ठीक है, ये प्रैक्टिस में कर सकते हो। ठीक, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। या ठीक है, इसमें देखो क्या किया जा सकता है। इसमें हमें सिर्फ बेसिकली एक्स इज आर। ठीक है, basically we have taken a bounded interval of real number system and उसमें we have to see its uniform convergence। ठीक है, तो देखो इसमें थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है, इसमें कैसा कर सकते हैं, समेशन -1 पावर n डिवाइड बाई रूट n, ये है। अब ये साइन 1 प्लस एक्स बाई एन, अगर इसमें से साइन 1 माइनस कर दिया जाए, ठीक है, तो साइन 1 प्लस भी करना पड़ेगा। यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब इसको चलो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, डिवाइड बाई रूट एन साइन 1 प्लस एक्स बाई एन माइनस साइन 1। ठीक है, वेयर एन इज नेचुरल नंबर, प्लस साइन 1 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं और ये अंदर रह गया हमारे पास समेशन -1 की पावर n बाई रूट एन वेयर एन इज नेचुरल नंबर। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अगर यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है तो अब तो आसान है। ये सीरीज तो वी कैन से कि दिस इज कन्वर्जेंट, और इसमें एक्स इन्वॉल्व ही नहीं है, सो विल से बिकॉज द सीरीज इज कन्वर्जेंट सो इट विल यूनिफॉर्मली कन्वर्ज। कन्वर्जेंट क्यों है ये तो दिस शुड बी वेरी इजी नाउ। दिस इज बाय लेबनिज टेस्ट, लेबनिज टेस्ट। ठीक है, या इसको ऐसा कर देते हैं, इसको लेट अस राइट समेशन ए एन समेशन बी एन। ठीक है, सो देखो नाउ समेशन बी एन इज इक्वल्स टू समेशन -1 की पावर n डिवाइड बाई रूट n। ये साइन 1 भी है, चलो साइन 1 तो बाहर है, कांस्टेंट है, तो n इज नेचुरल नंबर। अब देखो ये क्या है, लेबनिज टेस्ट, दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज। सो बाय लेबनिज टेस्ट क्या बोलता है, लेबनिज टेस्ट यही तो बोलता है कि कोई भी सीरीज अगर समेशन -1 पावर n un फॉर्म की है वेयर un इज ग्रेटर देन 0 and if un is monotonically decreasing and limit un is 0 then we'll say that the series is convergent। तो इसमें ऐसा हो रहा है, देखो 1 by root n is monotonically decreasing and limiting value of 1 by root n is 0 and this 1 by root n is always positive, so by Leibniz test the series is convergent, in fact uniformly convergent because x is not involved here, right। okay, और समेशन ए एन की बात की जाए, अब समेशन ए एन क्या है, समेशन -1 पावर n डिवाइड बाई रूट n साइन 1 प्लस एक्स बाई एन माइनस साइन 1। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म तो यही है, राइट। हाँ, अब अगर ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाए तो
वी आर डन। अच्छा x यहाँ पे एक बाउंडेड इंटरवल है, ये जरूरी है, अदरवाइज ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, अगर इसमें सिंपल x बिलोंग्स टू r बोल दिया जाए, अगर हमें ये नहीं बोला जाए कि बाउंडेड इंटरवल में देखो, देन विल से कि, तब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऐसा प्रॉब्लम, एंड इट वोंट कन्वर्ज इन फैक्ट यूनिफॉर्मली, इट विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ओनली इन द बाउंडेड क्लोज इंटरवल ऑफ रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें क्या कर सकते हैं, साइन 1 प्लस एक्स बाई एन माइनस साइन 1। इसमें देखो अगर वी कुड प्रूव कि ओके, देखो ये जो है इसको वी कैन राइट, ये cos x मान लो cos t dt कर दो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin t आएगा। अगर उसमें लिमिट हम ये पुट कर दें 1 प्लस एक्स बाई एन 1 से, तो ये क्या आएगा, साइन 1 प्लस एक्स बाई एन माइनस साइन 1, सेम चीज़ है। अब देखो अगर मॉडुलस ले लिया जाए दोनों तरफ से, साइन 1 प्लस एक्स बाई एन माइनस साइन 1, इसका मॉडुलस लिया जाए तो ये क्या आएगा, मॉडुलस हो 1 से 1 प्लस एक्स बाई एन कोस टी डी टी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब देखो अब इसमें क्या होगा, दिस विल बी लेस देन 1 से 1 प्लस एक्स बाई एन, मॉडुलस ऑफ कोस टी वो तो 1 ही हो गया डी टी, बाई मॉडुलस ऑफ कोस टी विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। सो ये इस वी हैव यूज्ड दिस प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन ए टू बी मॉडुलस एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, वी हैव यूज्ड दिस प्रॉपर्टी। ओके, ये वी हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ these sort of inequalities in complex analysis already। ठीक है, तो अब देखो इसको या ये मॉडुलस है, सो दिस इज 1 प्लस एक्स बाई एन माइनस 1 का मॉडुलस, दिस इज ऑफ कोर्स मॉडुलस एक्स बाई एन, एन तो नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होगा। सो व्हाट वी हैव दैट मॉडुलस साइन 1 प्लस एक्स बाई एन माइनस साइन 1 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स बाई एन, ये हो गया। और x जो है ये बाउंडेड इंटरवल है, सो हियर इट इज यूजफुल। अगर यहाँ पे x पे बाउंडेड कंडीशन नहीं होगी देन इट वुड बिकम डिफिकल्ट। ठीक है, बट हियर वी हैव दैट x इज बिटवीन a कॉमा b, सो दैट मीन्स ये जो होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, b हो सकती है। ठीक है, सो ये मॉडुलस b बाई n बोल लो इसको। सो दिस इज बाउंडेड बाई दिस विच इज अ फाइनाइट नंबर इन फैक्ट। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 या इंक्रीज होगा, ये 0 होगा व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो इट विल बी ऑलवेज बाउंडेड। ठीक है, नाउ या नाउ व्हाट वी कैन डू दैट, सो माइनस 1 पावर n बाई रूट n साइन 1 प्लस एक्स बाई n माइनस साइन 1, यही है हमारे पास। और इसका मॉडुलस इज लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई रूट n, modulus of this and modulus of sin 1 plus x by n minus sin 1। ठीक है, so this is equals to 1 by root n and modulus of this is less than mod b divided by n। ठीक है, ये तो हमने यहाँ से ये यूज कर सकते हैं that the modulus of this sin 1 plus x by n minus sin 1 is less than mod of b divided by n, so this is mod of b divided by n power 3 by 2 where b is of course a finite number। ठीक है, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट समेशन माइनस 1 पावर n बाई रूट n साइन 1 प्लस एक्स बाई n माइनस साइन 1 का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस b डिवाइड बाई n पावर 3 बाई 2 का समेशन। ठीक है, नाउ बाय p टेस्ट वी कैन से दिस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, बाय p टेस्ट समेशन 1 डिवाइड बाई n पावर 3 बाई 2 मॉडुलस b तो बाहर ले सकते हैं, इज कन्वर्जेंट and in fact it is independent of x, so this is uniformly convergent। ठीक है, so this is convergent, so by m test या mn test, where is to mn test, this इस ये क्या था, समेशन an था या bn था, हमने एज्यूम किया था इसको, this was summation an
ठीक है, समेशन एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। सो या एज समेशन एन एंड समेशन बी एन बोथ यूनिफॉर्मली convergent in A comma B, show summation minus 1 power n by root n sin 1 plus x by n is uniformly convergent for x where x is A comma B, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसमें बस यही हमें सोचना था कि यहाँ पे बेसिकली इसको बाउंडेड करने के लिए हमें ये माइनस साइन वन करना था, ठीक। आई होप ये समझ में आता है। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। या next question is this. Okay, so this is a series and here also theta is a bounded interval. Theta belongs to bounded interval a comma b. So first of all let us combine this 1 by a plus summation 2a divided by a square minus n square cos n theta minus 1 power n where n varies from 1 to infinity. We can write this that way, this way, ठीक है। कैसे? सिंपल सी बात है, देखो 2a is throughout constant and theta 2 theta, so cos n theta, a square is constant throughout, this is 1 square 2 square, so basically n square, ठीक है। and the first term is not fitting in our formula, so we'll keep it away. So this is anyway finite number, जो है ये minus 1 power n, या ऐसा कि a स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मॉडुलस जो है, ठीक है, इसको वी कैन राइट n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो व्हेन n इज वेरी लार्ज, ठीक है, देन मॉडुलस n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू n स्क्वायर विच विल बी ऑफ कोर्स ग्रेटर देन n स्क्वायर बाई 2, n स्क्वायर बाई 3, कुछ भी ले लो, ठीक है। जब n इज वेरी लार्ज तो उसके फ्रैक्शन से तो बड़ा होगा ये, a स्क्वायर विल बी compared to n, a square will be very small because n we have taken very last, ठीक। तो यहाँ से what we can say 1 divided by n square minus a square is less than 3 divided by n square, ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, इसमें देखो माइनस 1 पावर n 2a डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos n थीटा, अगर इसका मॉडुलस लिया जाए so then this will be less than 2a cos n theta modulus will be less than 1, and देखो this modulus of this is less than 3 by n square, ठीक है। so यहाँ से what we can say that this is equals to 6a n square, ठीक है। अब देखो what does that convey is that this given series summation minus 1 power n 2a cos n theta डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू 6a समेशन 1 बाई n स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं, वेयर n इज नेचुरल नंबर, बट दिस इज कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट, ओके। यहाँ पे n वी कैन टेक वेरी लार्ज, ठीक है, बिकॉज दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड व्हेन वी आर टेकिंग n वेरी लार्ज, ठीक है। सो by mn test given series is uniformly convergent, okay। I hope ये समझ में आता है। Okay, let us take this question. Summation minus x power n divided by n 1 plus x power n, where x is real number system, x belongs to real number system. So basically here we have to see for any interval of real number system, any interval, ठीक है। So let us try
Okay, इसको we can write summation minus 1 power n divided by x power n divided by 1 plus x power n. Now it looks easy. How? Okay, n is natural number. So here summation minus 1 power n, where n is natural number, is convergent, and because it doesn't depend on x, so this is uniformly convergent by Leibniz test. Okay, if you have any doubt in these sort of series, but that why it is converging by Leibniz test, then I have covered in some previous lecture under the heading Leibniz test. So these are the basic concept of Leibniz test. Okay, so from that this will be convergent. Now let us take this as summation anx. Okay, now bn, if we take bnx as x power n divided by 1 plus x power n, okay, then this is of course monotonic. Okay, and this will be less than 1 by x power n is being divided by 1 plus x power n, so the denominator is of course more than numerator. Okay, so this is modulus of x n is less than 1. Okay, so from that what we can say that what does that mean? That means b and x modulus is less than 1 for every x belongs to R, in fact. Okay, so monotonic b and x is monotonic and uniformly bounded. Okay, I am writing only monotonic because when x will be less than 1, then this will monotonically decrease, and when x is greater than 1, this will monotonically increase. Okay, this is simple concept. Like if we take it in place of x as 2, then 2 power n divided by 1 plus 2 power n. Okay, so this will be our this bnx term. So if we differentiate this with respect to n, then it will come out to be if let us say this is bn, so bn dash x to n we are differentiating it, then that thing will come out 0 with, so this will be increasing. Similarly, when the x is let us take 1 by 2, then this will be 1 divided by 1 plus 2 power n, which is of course monotonically decreasing. Okay, so in both the cases it will be monotonic, either it will decrease or increase, or and it is bounded as well by 1. So which test is being satisfied now? Okay, so as summation n x n varies from 1 to n is okay, n to infinity is uniformly convergent and bnx is monotonic and uniformly bounded. So by Abel's test, not Dirichlet, Abel's test will apply here. Okay, given series is uniformly convergent. ठीक है, in अच्छा, in what interval? See, in this case this is valid for every basically every x of real number system R, so any interval in real number system it will converge. ठीक है, जैसे a comma b, if we take on a, okay, on a comma b. Okay, so now let us take next question. Yeah, question 5th. Okay, in this case,
Okay, so here x is greater than 1 plus delta, where delta is greater than 0 and x belongs to R. So simple, because x is greater than 1 plus delta, n power x will be greater than n power 1 plus delta, and we can say that 1 divided by n power x will be less than 1 divided by n power 1 plus delta. ठीक है, summation of this will be less than summation of this. अच्छा, okay. Log n is there, so log n, because n, when n is 1, this will be 0 anyway, so n2, log 2 will be positive, log 3 will be, all these terms will be positive, so we can multiply by log 2 both sides. ठीक है. अच्छा, इसको we can write log n divided by n 1 plus delta by 3 into n 2 delta by 3. We can write like this, means any sort of bifurcation will do. ठीक है. 1 plus we can write del by 4 and 3 del by 4 as well. ठीक है. और इसको we can write 1 divided by n 1 plus delta by 3 into log n divided by n power 2 delta by 3. Right? Now let us put the summation. We can write like this. अच्छा, further also log n is always less than n power theta if theta is greater than 0 for very large n. This is true how? If we take limit n tends to infinity log n divided by n theta, then this is infinity by infinity form, so by L'Hopital rule we can say that 1 by n theta n power theta minus 1 limit n tends to infinity, or this is 1 by theta n power theta limit n tends to infinity, and theta is positive here, so this 1 divided by infinity, this is 0. N power theta is increasing by greater rate than log n when n is very large, so n power theta will be greater than log n. Okay, so theta is anything greater than 0, so 2 delta by 3 is greater than 0, so we can say that log n divided by n 2 delta by 3 is less than 1. This is less than 1 for large n. Okay, I hope it clear hai. So what we can say that that summation log n nx is less than summation 1 divided by n power 1 plus delta by 3. This term is less than 1 anyway, so n is natural number. Now this is easy because by p-test summation 1 divided by n power 1 plus delta by 3 is convergent, or because there is no x, so this is uniformly convergent in fact. Okay, so when this is convergent, then by p-test by mn given series is uniformly convergent. ठीक है, आई समझ में आता है. So this is very easy question in fact, easy and short in fact, plus good also. Okay, so let us try final last question, and this is controversial question in fact. Okay, some books say that this is uniformly convergent, some say that this is not uniformly convergent in 0,1, but the method I tried, it comes out to be uniformly convergent. Okay, in Malika Roda it is written that this is not uniformly convergent, and some books say this is uniformly convergent, but if we solve it, it comes out to be uniformly convergent in fact. Okay, so 1 minus x is
square is constant with respect to n, so we can take this out, x power n varies from 0 to infinity. This is 1 minus x whole square, and this is GP, geometric progression. Basically this is 1 plus x square and so on. So sum of GP is a times Rn minus 1 divided by r minus 1. X is less than 1, so we can write this 1 minus Rn, that is x power n divided by 1 minus x. Okay, this can be written as 1 minus x. 1 minus x will cancel each other, and 1 minus x power n. This is when x is not equals to 1. Because x is equals to 1, then we cannot cancel these terms, no? Right? So if x is 1, then this this is 1 minus x square plus 1 minus x square x plus so on. So when x is 1, because every term is being multiplied by 1 minus x whole square, so every term will be 0. So in that case, this is when x is not equals to 1. When x equals to 1, then so even in this, when x is 1, then this will be 0. So basically what we can say, this is not till infinite. In fact, these are the sum of n terms only. This is sum of n terms. So this is the sum of n terms, 1 minus x, 1 minus x power n. Okay, where x belongs to 0, 1. Okay, now let us write some function for it. Some function that will be limit n tends to infinity. This okay, when x is less than 1 basically and greater than equals to 0. Okay, in this case, when we'll put a limit n tends to infinity over a quantity less than 1, this will be 0. So 1 minus x into minus 2. Okay, x is equals to 1, then this is 0 anyway. Okay, so this is coming out to be 1 minus x. When we put x equals to 1 here, तो 0 आएगी. So directly we can say that some function is 1 minus x only. ठीक है. Now because we have converted the series problem into sequence problem, so we can write mn. mn क्या होगा? Sn minus s. Supremum of this we need where x is over. ठीक है. So this is 1 minus x, 1 minus x power n, and this is 1 minus x का मॉडुलस where x is basically 0 से 1 के बीच, एंड इसका चाहिए सुप्रीमम में. ठीक है. Okay, so this is basically this is 1 minus x into x power n, right? 1 minus x will cancel 1 minus x. मॉडुलस है तो माइनस तो कोई इश्यू है नहीं. इसका सुप्रीमम वेयर x बिलोंग्स टू 0, 1. ठीक है. अब देखो इसमें अगर 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, इसका हमें चाहिए मैक्सिमम. तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ रहा है? माइनस एक्स पावर एन प्लस 1 माइनस एक्स एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1. दिस शुड बी 0. और वी कैन से दैट माइनस एक्स plus 1 minus x into n should be 0. We have divided throughout by x power n minus 1. So that what does this mean? X equals to minus 1 minus n plus 1 equals to 0. No, plus n equals to 0. Or from this what we can say that x equals to n divided by n plus 1. Okay.
Okay, so basically this is the point of maxima. For that we need double derivative as well. So if we differentiate twice this 1 minus x into x power n, तो दिस इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें माइनस एन माइनस n टाइम्स एक्स एन माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन माइनस एक्स एन एक्स की पावर n माइनस करेंगे तो n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू. Okay, now if we take x power n minus टू and n outside, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस okay here also you minus x. Okay, so this is twice now and this and this has been taken out, so we have here plus n minus वन into वन. ठीक है. Yeah, now if we put x equals to n divided by n plus 1, so this part is positive anyway, and x power n minus 2 minus 2x n divided by n plus 1 plus n minus 1 into 1 minus x करेंगे तो that is 1 minus n divided by n plus 1, that is 1 divided by n plus 1. Okay, so this is n x n minus 2 n plus 1 if we take denominator as common plus n minus 1. So this is minus n minus 1, this is less than 0. Okay, so x equals to n divided by n plus 1 is point of maxima. ठीक है. Plus now we put this value in the mn term and we are done. Okay, so we'll put in this expression in this is mn. Okay, so mn equals to 1 minus x into xn, where x is equals to n divided by n plus 1. So 1 minus n divided by n plus 1, this is 1 divided by n plus 1 की power n. ठीक है, so this is 1 divided by n plus 1 and this is 1 plus 1 by n power n. We can write this way. पर देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की पावर n, ये क्या होता है? दिस इज नथिंग बट e. ओके, दिस इज वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म, सो e log 1 प्लस n n बार आएगा, उसको 1 बाई n लिखिए. दिस इज e, दिस इज ये तो बहुत बार किया आपने. ठीक है, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 limit n tends to infinity 1 divided by 1 plus 1 by n की power n. So this is 0 into this is e, so this is 0. ठीक है. So by the convergence test we can say, so by test of uniform convergence of sequence given series is convergent, because we have seen the sequence of partial sum. ठीक है, is convergent, uniformly convergent. Okay, so by this method it comes out to be uniformly convergent, but some book says that this is not uniformly convergent, which I think is not correct. Okay. Okay, so this ends Dirichlet Average test. Now I will take some advanced questions related to uniform convergence, which will deal with the integrability, differentiability, and continuity of functions. Okay, so bye bye, take care.